Good morning, students. Today we will study about some laws of science. Children, now take out your lesson number 49, Laws of Science. Now the first one. Read these famous laws of science and write their names using the help box. Now children, in the help box, certain names are given like Archimedes principle, Pythagorean theorem, Avogadro's law, Ohm's law, Hooke's law, law of conservation of energy, Pascal's law and Newton's third law. These are the names of laws given, and with the help of these names you will fill the blanks given. Now the first one. The square of the hypotenuse is equal to the square of the hypotenuse. See this, we have squared this hypotenuse. This is a right angle triangle. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the both of the two sides. Two sides means, suppose we have got a right angle triangle. This is the hypotenuse, this is the largest side, and this in Pythagoras theorem you have to keep in mind that this should be a right angle triangle, not any other triangle. This is 90 degree. Since this is 90 degree, the opposite side will be the longest side. This is the longest side and it is called hypotenuse. And this is the perpendicular and this is the base. Now the square of hypotenuse is equal to the sum of perpendicular square plus base square. If you want to find out the length of this side, you can use this formula and find out. Next one. For every action, there is an equal and opposite reaction. Children, very well you can guess this law. This is Newton's third law. जैसे मान लो आप चल रहे हैं, तो हम जिस फोर्स के साथ जमीन को हम पीछे, जब हम आगे बढ़ते हैं, एक्शन करते हैं, तो जमीन को हम फोर्स अप्लाई करते हैं जमीन में, और जिस फोर्स से हम पीछे जमीन को छोड़ते चले जाते हैं, उसी रेट से उसी का रिएक्शन होता है, आगे फॉरवर्ड हमारा आगे पाँव बढ़ता है. तो जो जैसा एक्शन होगा वैसा ही उसका रिएक्शन होगा. जितना आपने फोर्स अप्लाई किया ग्राउंड को, उतनी ही फोर्स के साथ आप आगे बढ़ोगे. नेक्स्ट, थर्ड वन. अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of different gases contain the same number of molecules. अब अगर सपोज दो गैसेस हैं, उनका इक्वल वॉल्यूम है, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम ही होंगे. दिस लॉ इज एवोगाड्रोस लॉ. ये क्या स्टेट करता है? दो गैस अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उसका मॉलिक्यूल भी सेम होगा. नेक्स्ट वन इज the volume of displaced liquid is equivalent to the volume of an object fully immersed in a fluid. अब suppose, look at this figure. Suppose किसी एक कंटेनर में पानी है, ओरिजिनली वो 20 लीटर्स है, उस पर अगर हमने कोई स्टोन डाला, तो स्टोन जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसकी वजह से वाटर का लेवल राइज कर जाएगा. मतलब जो जितना हमारा स्टोन ने स्पेस लिया, उतना ही वाटर का लेवल राइज कर गया, और नीचे से वाटर जो है एक प्रेशर दे रहा है, जिसको एक फोर्स दे रहा है, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं. और ये बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. डिस्प्लेस्ड का मतलब है इस स्टोन ने आपके इसके अंदर जगह ली, और उस जगह को जो उसने लिया है, जो उसने जगह बनाई है लिक्विड के अंदर, दैट इज फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. इन अ फ्लूइड एट रेस्ट,
In a closed container, a pressure change in one part is transmitted without loss to every portion of the fluid and to the walls of the container. अब अगर सपोज किसी एक चीज में लिक्विड है और क्लोज कंटेनर में लिक्विड है, this has got any kind of fluid at rest. अगर उसमें कहीं से भी प्रेशर आता है तो चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से प्रेशर आए, चारों तरफ से इसके ऊपर वो इक्वली जो है काम करेगा. So this, if a fluid is at rest in a closed container, a pressure change in one part is transmitted without loss to every portion of the fluid and to the walls of the container. ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो चारों तरफ इक्वल होगा. ये नहीं कि सेंटर में ज्यादा हो रहा है या ऊपर से, अगर हमारा प्रेशर ऊपर से आ रहा है तो ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा. चारों तरफ इस कंटेनर के फ्लूइड के जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसका जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर सब में बराबर होगा. दिस इज पास्कल्स लॉ. नेक्स्ट वन, द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस and inversely proportional to the resistance in the circuit. अब करंट के साथ इसका सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V is potential difference, I is current to the applied potential difference. V is equal to I and R. V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है, और V और I के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है. V इज डायरेक्टली, अगर करंट ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा. लेकिन करंट के साथ जो रेजिस्टेंस है उसका ऑपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप होता है. करंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है. सो अगर करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो I is proportional to potential difference and I is current is inversely related to resistance. तो जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो V upon R हो जाता है. और अगर हम V को निकालेंगे तो V is equal to I R, and this one is Ohm's law. Sixth one is Ohm's law. इस लॉ में ये कहा गया है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और रेजिस्टेंस का इनवर्सली रिलेटेड है, ऑपोजिट. अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी और अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. Next one, energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. इस जगत में जितनी भी एनर्जी है वो फिक्स्ड है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो घट बढ़ नहीं सकता. जैसे सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी से प्लांट जो है अपना फूड बनाता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के थ्रू. सोलर एनर्जी गेट्स चेंज इनटू chemical energy through the process of photosynthesis. This is law of conservation of energy. और हर चीज का अल्टीमेट एनर्जी का जो सोर्स है वो सोलर एनर्जी ही है. सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. And next one, the force needed to extend or compress a spring by some distance is proportional to that distance. Now this is Hooke's law. इसमें क्या है, अगर आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं या उसको एक्सटेंड करते हैं, जिस अमाउंट उतना ही डिस्टेंस वो स्प्रिंग जंप करके जाएगा, उतना ही डिस्टेंस जितना आपने फोर्स लगाया होगा उसके साथ. दिस इज
Hooke's law. Now children, the footnote. The first scientist to recognize and use the power of the liver was the great mathematician Archimedes. Now Archimedes जो है वो great mathematician है who has recognized and used the power of liver. Now children, we come to next lesson. Now children, in 50th lesson we will talk about space mission. Now in this exercise you have to tick true or false. The first one, the Apollo program was the first to carry human beings to the moon. Children, this statement is true. Now what is this Apollo program? This is United States Human Space Flight Program. And this is also called, Apollo program is also called Project Apollo. And this project ran from 1961 to 1972. And Apollo program was the first program to send human beings to moon. Now the second one, the GSLV-3 launched by the Indian Space Research Organization is India's heaviest rocket. Children, this statement is again true. GSLV, its full form is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, and it is the largest launch vehicle developed by India. GSLV is the largest launch vehicle developed by India. Now the third one, it is true. Second one is true. Third one, the Magellan spacecraft is also referred to as the Saturn Radar Mapper. This is false. The Magellan spacecraft is referred to as Venus Radar Mapper. And Magellan spacecraft was a robotic space probe launched by NASA of the United States on May 4th, 1989. NASA का नाम तुमने सुन रखा होगा. Full form of NASA is National Aeronautics and Space Administration. Now the fourth one, Juno is NASA's mission to Jupiter. Children, this statement is true. Juno entered the orbit of Jupiter on July 4, 2016. नासा का मिशन था ये जूनो, जो जुपिटर के ऑर्बिट में वो उसने एंटर किया 4 जुलाई 2016 में. Now the fifth one, the Spirit rover and Opportunity rover were robotic explorers sent to the moon. This is false. It was not, these robotic explorers were not sent to moon, it was sent to Mars. And Spirit rover, this is also known as MERA or MER2. And it was active from 2004 to 2010. And Opportunity rover, this is known as MERB or MER1. And this was active from 2004 to 2018. ये दो रोबोटिक एक्सप्लोरर्स हैं और इनको मार्स में भेजा गया था, ना कि मून. नाउ द सिक्स्थ वन, द सोयूज T11 mission capsule carried the first Russian to outer space. No, Soyuz T11, this carried the first Indian to space, and the first name of the first Indian is Rakesh Sharma.
Now, Soyuz T-11 mission was a 181 days mission. It was launched on 3rd April 1984 and its landing date when it came back was 2nd October 1984. Next one. The Messenger is the first spacecraft to enter Mercury's orbit. It is true. मैसेंजर्स जो है वो 18 मार्च 2011 को एंटर किया इसने मरकरी के ऑर्बिट में. It orbited the planet between 2011 and 2015. Now the last one, 8th one, the Cassini-Huygens mission was a probe to study Saturn, its rings and natural satellites. It is true. Cassini-Huygens mission was the 4th space probe to visit Saturn, and it landed on Saturn's largest moon, and the name of the largest moon of Saturn is Titan. Now children, in the footnote it is written, the space shuttle Columbia launched by NASA was the first reusable manned spacecraft to travel into space. Now about Columbia, it is the reusable manned spacecraft. ये spacecraft जो था इसको दोबारा भी यूज किया जा सकता था, जिसको कि नासा ने स्पेस में भेजा था. Now children, we come to lesson number 51. In this you will come across some modern technologies about which you are familiar, and you also have studied these things in your computer lessons, like terms like Bluetooth, GIF, cloud storage. These are some of the topics which you will need in this lesson. Now children, about Bluetooth you know. Bluetooth क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जिसको कि अगर हम कोई पिक्चर, कोई फोटोग्राफ किसी के साथ शेयर करना चाहे, पास में ही अगर वो है तो हम उसको भेज सकते हैं, लेकिन उसका रेंज बहुत कम होता है ब्लूटूथ का. अगर बीच में कोई बॉल आ जाती है या कोई डोर आ जाता है तो हो सकता है ब्लूटूथ उस मैसेज को, उस पिक्चर को ना कैरी करे, ना भेजे. इसलिए ये शॉर्ट रेंज एक डिवाइस है. सेकेंड वन है ब्लूटूथ के बाद GIF. इट इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. ये क्या होता है? छोटे एनिमेटेड इमेजेस हैं. इस इमेज में वीडियोस भी हो सकते हैं और वीडियोस और इमेजेस दोनों हो सकते हैं. कैमरा क्या करता है? वो स्टिल फोटोग्राफ को वो दिखाता है, लेकिन GIF में ये एनिमेटेड वीडियोस होते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लाउड स्टोरेज. इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्लाउड स्टोरेज में फाइल्स को हम इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं. और उसके बाद है वीडियो ऑन डिमांड. इसमें हम सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी मूवी हो, कोई भी पिक्चर हो, सीरियल हो, उसको हम डिमांड कर सकते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ video on demand. It is a type of program in which we can see any video, serial, movies, and it can be demanded from the service provider. Next is virtual assistants. Virtual classes लगती हैं आपकी. Virtual का मतलब है बोलकर, with the help of voice.
हेल्प, बोल कर जो हेल्प किया जाता है, तुम्हें लेसन वीडियो के थ्रू तुम्हारे तक पहुंचाई जाती है, उसमें बोल कर तुम्हें लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, असिस्ट किया जा रहा है, तुम्हें हेल्प किया जा रहा है। डिवाइसेस को वॉइस कमांड दिया जाता है और अकॉर्डिंगली एक्शन कर लेते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे एप्पल, सीरी, माइक्रोसॉफ्ट, कोर्टाना, अमेजन, एलेक्सा को कमांड देते हैं कि इस मूवी को दिखाओ, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। और उसके बाद लास्ट है वीडियो चैटिंग। वीडियो चैटिंग में तुम किसी को अपने सामने देख करके, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो उसको अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हो थ्रू इंटरनेट पैकेजेस लाइक वाईफाई, स्काइप इनके थ्रू उनके साथ आप वीडियो कॉल करके उस पर्सन के साथ डायरेक्टली फेस टू फेस तुम बात कर सकते हो। ये सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं और इन 3 चैप्टर्स का काम आप करोगे और उसके बाद मुझे यू विल सेंड दिस वर्क टू मी। थैंक यू चिल्ड्रन।